You guys can hear me? So the previous speaker was speaking in Hindi. Most could understand because I'm more comfortable in Hindi. Okay. But we'll figure out. No? Okay. Okay, for the minority, a little bit of English. Okay. Okay. So I'll kind of talk simple, no mumbo jumbo of my market gyan. There's enough and more of it everywhere. Just for 2 minutes, I'll give you a context of what I'm thinking of broader markets as to what you can expect. Some of it may be in conflict to what other speakers would tell you. But that's the beauty of markets, right? Because different people have different views. First thing first, big picture macro, my sense is that I'm less pessimistic on India today than what I have been for the last 2 years. But still I'm pessimistic from the point of view of that there is little returns to be made from equity. So I've made this point many times over the last 2 years that you would likely earn barely 9-10% returns in India if you stay invested for 10 years in Indian equity. Mota moti, my view now is that we will probably earn close to 10% over a decade. So that's basically because of simple math that India's growth, which was for good 20-25 years, was 12% nominal GDP growth. So 7-odd% of real and 5-6% of inflation on average, actually was sufficient for equities to deliver somewhat close to 12-13% returns. So 11-12% return actually. If you look at long run Nifty returns are close to 11-12% total return, including dividend. But because the nominal GDP growth, which is sort of a combination of real and inflation together, that has dropped to near 10%, and which is why you, your client, your fraternity should review the expectations from equity market. 10 is not a bad return on a 4% inflation, but a 10 is certainly bad relative to the expected. If I were to ask a median expected return of an investor even today, invariably it is assumed that in long run you will make 14-15%. One, you've not made 14-15% over in long run, and you would certainly not make 14-15% in this decade. So that's a big picture view. Second is that I do equities. So here is idea is not to necessarily promote an alternate asset class, but I'm going to sort of make a small pitch to you. Perhaps for many of you, it is you guys are acquainted with an asset class called private credit. But my point is more broader in a sense that you could look at an alternate asset class as advisors for your clients, which perhaps could actually do a little bit of a magic to their portfolio. Something that is much less known because, of course, for the reason that it's actually relatively new asset class. So I'm going to give you a very, very basic first principle understanding. As an advisor, if you were to talk to a client, what are the things that you would like to talk? And maybe, that will give you a kind of some talking points. But more importantly, you will actually comprehend, what exactly it is. So this is PPT I made last night. I sent it to Vinayak. It's all thanks to AI, but I kind of did engage with the AI tools of, because I heard, Centricity put up, lots of stuff that they're doing on the AI, and, I'm absolutely sure that any firm, and that's kind of a detour, but any firm which actually embraces AI is the only firm which will survive, and so is the case with advisors. So I'm very happy for my partners, Centricity, that they're embracing, and you must embrace AI. Nonetheless, we kind of, what are you actually buying in terms of private credit? Okay, it is of course fixed income, but in terms of the very nature of it, it is still a pooled vehicle. The Cat 2 fund that you all invest in for private credit is sort of a cousin of a mutual fund, you could say, because it is a pooled vehicle, that all investors' money come in a single fund and invest exactly the way mutual funds do. So it's a pure pooled vehicle, and that is the similarity vis-a-vis a mutual fund. The dissimilarity, of course, is that it is as if all the investment made in the fund is actually owned by the investors directly in their book. So from a taxation standpoint, it is a pass-through vehicle, not like mutual fund where basically
the securities you don't own directly. In mutual fund, you own the units of the fund. In here, actually, it is as if from a taxation standpoint, you own all the securities directly. So that's kind of the second major, the kind of a difference or dissimilarity vis-a-vis mutual fund. And of course, most of this makes sense for investors only because, these funds actually yield higher than typical fixed income. The yields that kind of one earns in a typical corporate FD or fixed deposits or corporate bond funds and mutual fund, these funds invariably earn, I would make an argument later, but 5, 6, 7, or 8% more than much of these alternatives in the fixed incomes. And to that extent, I said originally that it could do a little bit of a magic to the investors because you almost come very close to equity returns. But here's the magic that you actually don't absorb the equity volatility in it. The typical standard deviation of 18, 19% in equity, which actually expresses itself in the form of every 3 year 15, 20% drawdown, and every 8, 10 years a 40, 50% of drawdown, does not happen to private credit. It has its own nuances, it has its difficulties, it has its own risk, and we'll talk about them. But okay, big picture, when you're talking to a client, call it like a mutual fund, but from a taxation standpoint, of course, a pass-through vehicle, and from a yield point of view, a substantially better outcome than what you would, and almost any private credit fund, be it ours or anything that Centricity suggests or any decent advisor suggests, outcome of that particular high yield fund would be few percentage higher than what you would actually earn in the mutual fund, fixed income funds or fixed deposits. Okay, so just to give you a very big picture context, and I'm actually, as I said, I'm talking first principles here. That what kind of private credits, because you will hear that, okay, uska to 20% banta hai, aapka 14 banta hai. So these are different there are 5 kinds of, so you'll have to go through this learning curve as exactly what you did over the last 20, 25 years with respect to equity. That all kinds of varieties of equity exist and equity funds exist. Somewhat similar actually applies to private credit also. Indian markets are still developing, but primarily there are 5 buckets. Okay, that you would see. There will be sort of a performing credit, that is what you will hear. Primarily, these are firms, you are funding them. They are already performing. Invariably, they are bankable. Banks are already lending to them. And there are some unique reasons they're borrowing at 12, 13, or 14%. We'll talk about why these firms, which otherwise are borrowing from Kotak and ICICIs of the world at 8, 9%. And almost all of these firms are actually borrowing at much lesser rate from banks. Why do they give to people like us, such high yield? We'll talk about the reasons also because your clients are going to ask you. So one category is performing credit, which is primarily a cash flow finance. You are actually funding cash flows of a company. You will return, when you lend to that company, the cash flow of the company will actually return money to you. So that's the number one category. That, a lot of people will call a lot of things as performing. But primarily performing is cash flow financing, and some of us do a part of our portfolio. Very few actually do the pure performing. Otherwise, it's a mix of structured finance and performing, like our fund. The second fund is structured finance, which kind of funds which do not lend basis cash flows, but they actually are funding an event. They're funding that, okay, the promoter will actually file DRHP and raise equity, or the promoter will actually borrow money and refinance it later, or there could be an acquisition right now, but would later be sort of integrated or consolidated with the sort of parent balance sheet. There could be multiple reasons, but then the structured finance is a kind of you're trying to weave a structure. आप जो finance कर रहे हो उसके चारों तरफ basically एक structure का wheel बना रहे हो. And that actually secures you. So it's not a cash flow finance. In some sense, it's a security finance. In a performing credit, primarily the security is cash flow because banks don't finance typically against securities. Typically. Structured finance is primarily about security. And there what becomes very important is that whether that security is tangible and enforceable. Matlab, can you feel that security? It can't be plant and machinery. It can't be trees. It can't be a agricultural land. Tangible.
and enforceable also, that you should be able to sell that security. You could be able to sell shares, but you may not be able to sell plant and machinery. You could be able to sell sort of a city center commercial house, but you may not be able to sell a house or houses or land in a rural land. So basically, structured finance is sort of pretty much a lending against a specific security, but the promoter or the company that you are funding is actually performing. So here is a small catch. Performing credit primarily is lending against cash. Structured finance is lending against security, but underneath the basic idea is that you are lending it against sort of a specific security. The third category of investments, the funds that you will see in our space. Sorry? Hindi? Okay. तो पूरा English हो गया. So it's very, all of us are human beings are so constrained, that we can't switch. मैं अब हिंदी में बात करूँगा सिर्फ. तो तीसरा तरीका है रियल स्टेट. रियल स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हमने अपना AI टूल बनाया, उसको नहीं मुझे पता है रियल स्टेट चलेगा. मैं आपके सामने एक हमारा AI टूल डिस्प्ले करूंगा, मैं उसको बोलूंगा हिंदी में बात कर, वो ऐसी हिंदी बात करती है, मैंने कहा भाई तो इंग्लिश में बात कर. ये विविध तरीकों की स्कीमें हैं, है ना? तो ये 5 स्कीम को क्या बोलते हैं? तो एनीवे, तो बेसिकली तीसरा तरीका है रियल स्टेट फंड्स आपको मिलेंगे. ऐसे कई रियल स्टेट में भी कुछ तरीके हैं. एक है जो कैश फ्लो को यानी कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को फाइनेंस कर रहा है, एक लैंड को फाइनेंस कर रहा है और एक अप्रूवल को फाइनेंस कर रहा है. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज ये बार बार बोलना पड़ेगा, हर साल मैं आपसे मिलूंगा, बट ये अलग अलग तरीकों से लोग इस बिजनेस को करते हैं. तो रियल स्टेट में भी 3 कैटेगरी के फंड हैं. जैसे कुछ फंड्स हैं, जैसे HDFC का कैपिटल है, बहुत पुराना है, रुंगटा जी चलाते हैं उसको, वो रियल स्टेट को लैंड लेवल पे फाइनेंस करते हैं. देन मिड इनकम हाउसिंग जो फाइनेंस करता है, थोड़ा अप्रूवल लेवल पे और थोड़ा कंस्ट्रक्शन लेवल पे. वो हम सब लोग अक्सर मोस्टली अप्रूवल और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन लेवल का फाइनेंस करते हैं. वहाँ पे आपको थोड़ा यील्ड कम मिलता है. जब आप लैंड को फंड करते हैं तो आपको 20 से 24% मिलता है, जिसमें प्रमोटर आधा डालता है और आधा आप डालो. जब आप अप्रूवल के लिए डालते हैं तो आपको 25-30% डालना पड़ता है. अगर 100 करोड़ का लैंड था, प्रमोटर ने खरीद लिया और उसके बाद में आप थोड़ा बहुत उसको फंड करते हो और बाद में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पूरा बिल्ड करते हैं, जो बैंक भी कर सकता है. लेकिन रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बैंकों से फाइनेंस जो है इज एक्चुअली समवॉट डिफिकल्ट, एंड विच इज़ वाई ये कैटेगरी, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस लोगों का खराब रहा है, तो ये कैटेगरी में थोड़ा यील्ड बेहतर मिलता है. बट 16 से 24% या 15 से 25% का रेंज है. तो बहुत वाइड है रियल स्टेट में भी. कुछ रियल स्टेट जैसे प्रेस्टीज को अब मैं फंड करूंगा मैं, या DLF को फंड करूँ, DLF को फंड करने के लिए मुझे सिर्फ 10.5 मिलेगा. प्रेस्टीज को फंड करने में मेरे को 11-11.25 मिलेगा. पुणे का एक अच्छा बिल्डर है कि कोल्टे पाटिल है तो उसको 12-12.5 मिलेगा. और अगर श्रीराम को फंड करूंगा तो 14-15 मिलेगा. और फिर धीरे धीरे जब नीचे चला जाऊंगा एकदम माइक्रो मार्केट के अंदर, दिल्ली या बॉम्बे में कोई गुड़गांव का एक ठीक ठाक बिल्डर है, उसको फंड करूंगा तो 17-18 या 19 मिलेगा. तो एक बहुत बड़ी रेंज है रियल स्टेट में. आपको ये जानना पड़ेगा, अपने फंड मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा एग्जैक्ट रियल स्टेट करते हैं. पर 3 तरह का रियल स्टेट आप ध्यान रखना है. कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जो करता है वो थोड़ा नीचे यील्ड है, जो लैंड फाइनेंस करता है वो सबसे ज़्यादा यील्ड है, और जो बीच का है, जो द मिडिल लेयर विच इज़ एक्चुअली अप्रूवल फाइनेंस, वो थोड़ा सा कम रिस्की है. कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, लेकिन लैंड फाइनेंस से कम रिस्की है. वहाँ पे बीच का यील्ड है, 17-18% का पोर्टफोलियो बन सकता है. तो ये तीसरी चीज़ है. ये चीज़ एक्चुअली कौन करता था पहले? अभी AIF के पास ये अपॉर्चुनिटी कैसी आई है? क्योंकि ये सब इंडिया बुल्स हाउसिंग, पिरामल, एडलवाइस, IFL, ये बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, लेकिन मोटा मोटी सब लोगों ने बंद कर दिया है. क्यों? क्योंकि 2018 की क्राइसिस के बाद में उनको होलसेल फाइनेंसियर्स को NBFCs में पैसा मिलना ही बंद हो गया. और उसकी वजह से 2 रीजन से AIF इंडस्ट्री ग्रो हो रही है इंडिया में. एक कि जो NBFCs काम करते थे ये सब काम करने के लिए, वो मोटा मोटी बंद हो चुकी है, और क्योंकि उनको फाइनेंस नहीं मिलता है. और दूसरा कि 2023 के बाद में जो म्यूचुअल फंड में टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भी रुझान, basically the inclination to invest in funds like these actually has increased. So both from a demand and supply side, there has been a little bit of a green signal coming into this asset class, and which is why a lot of these opportunities, all of these opportunities used to be actually exploited mostly by NBFCs,
but they are not there anymore, and which is why an opportunity for investor has come up. So तीसरा चीज़ है रियल स्टेट, चौथा है वेंचर डेट। बेसिकली कंपनी अभी तक पैसे नहीं बना रही है ना, लेकिन खूब सारा कैश है और बहुत बड़ा फंडिंग हो चुका है, तो आप उसके रनवे को फंड कर रहे हो। वो कंपनी बोरो क्यों कर रही है? क्योंकि ही डज नॉट वांट टू गो बैंकरप्ट। अगर उसका एक नेक्स्ट इक्विटी राउंड नहीं हुआ तो भी बच जाए, विच इज़ वाई एक्चुअली ही इज बोरोइंग मनी। टिपिकली 5-7 महीने, 8 महीना, 12 महीने का फंडिंग होता है, ये थोड़ा ऊपर की यील्ड पे होता है। एंड देन फाइनली स्पेशल सिचुएशन की कंपनी ऑलरेडी डिस्ट्रेस है, ऑलरेडी नुकसान कर चुकी है बैंकों को, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आप स्पेशल सिचुएशन फंड चलाते हैं। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सब में वो जो बोलते हैं कि रिस्क है तो इश्क है, सब में जैसे जैसे नीचे जाओगे वहाँ वैसे वैसे रिस्क बढ़ती जाएगी, लेकिन वो रिस्क प्राइस भी होती जा रही है कि 15% पे आपको परफॉर्मिंग क्रेडिट मिल रहा है, 14% पे, और 24% पे स्पेशल सिचुएशन मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट 10% का एक्स्ट्रा यील्ड मिलने की वजह से अगर 25% का पोर्टफोलियो अगर आपने बनाया है और उसमें 30-35% पोर्टफोलियो भी डूब गया, फिर भी आपके 11-12% का रिटर्न बन जाएगा। सो बेसिकली द थिंग इज दैट as you are going down, the risk is increasing, but the price is also increasing. As you are going down, you are actually switching from cash flow finance to a specific event kind of finance, you know. So that's a broad construct of, you know, how you could think. We'll share this portfolio presentation with you, so you don't have to take photographs. But big picture is that, you know, इस तरह से आप हमको assess कर सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद में I'll try and explain that ये सब लोग इतना महंगा, क्योंकि आप कई लोग आपसे पूछेंगे, आपका जो इन्वेस्टर पूछेगा, यार मेरे को 8-9% के ऊपर होम लोन मिल जाता है, मेरी दुकान के लिए मेरे को 10% पे वर्किंग कैपिटल मिल जाता है, तो ये बड़े बड़े लोग आप बताते हो बिलियनियर्स हैं, वो 14-15% पे बोरो क्यों करते हैं? तो उसका भी एक रीज़न है, और दैट रीज़न बेसिकली इज दैट, सबसे पहली बात, अगर बैंक किसी को फाइनेंस कर रहा है, किसी कंपनी को, उसके साथ में अगर AIF फंड या म्यूचुअल फंड कम्पीट करेगा तो उसमें मनीनेस नहीं है, उसमें पैसे नहीं बनने वाले हैं। तो रीज़न हमारी एग्जिस्टेंस से कहीं ये है कि बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता उसको ना। बैंक दो तरह की चीज़ों को फाइनेंस नहीं कर सकता, एक तो चीज़ ही खराब है, तो उसको मैं फाइनेंस करूँगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली वो वॉइड है कि जो बैंक भी फाइनेंस नहीं करता है और मेरे को भी फाइनेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता बिकॉज रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, और अगर उसको मैं फाइनेंस करता हूँ तो वी मेक मनी इन दैट, यू नो, एंड दिस इज वेयर यू हैव दीज 15-18-20% रिटर्न कमिंग इन। सो इसको आप अलग तरीके से क्लाइंट को बता सकते हैं कि थोड़ा रेगुलेटरी आर्बिट्राज है, बैंकों को बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं मिलती है। जैसे आप देखिए कि परफॉर्मिंग क्रेडिट के अंदर एक कोई कंपनी है, उसके पास में रिसीवेबल्स हैं कि भाई 90 दिन तक मैंने कोई माल बेचा है रिलायंस इंडस्ट्री को और 90 दिन में वो मुझे चुका देता है, तो उसको बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, कोटक बैंक, सब लोग 8-8.5-9% पे फाइनेंस कर देंगे। लेकिन अगर उसी ने किसी और कंपनी को बेचा है अपना माल और रिसीवेबल जो है वो थोड़ा सा ब्लोटेड हो गए हैं कि 120 दिन के हो गए हैं या 150 दिन के हो गए हैं, सामने वाली कंपनी चुका देगी, लेकिन उस कोई भी वजह से वो थोड़ा सा डिले कर रही है, तो इस रिसीवेबल्स को बैंक फाइनेंस नहीं करते हैं, तो उसको मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। परफॉर्मिंग क्रेडिट वाले लोग इस चीज़ को फाइनेंस कर सकते हैं, तो वो NPA नहीं है कंपनी के लिए, वो ये कि थोड़ा डिले हो गया है। तो अक्सर जैसे गवर्नमेंट को जब आप सर्विस बेचते हैं, तो जैसे हमने रोटोमैक, हमारा एक एक्सपोजर है, उसमें वो इलेक्ट्रिकल पंप बनाता है। अब वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को माल अपना टेंडर के थ्रू वो विन किया है और वहाँ पे अपना माल बेचता है। इनवेरिएबली गवर्नमेंट 180 दिन में पैसा देता है, क्यों? अब 180 दिन वाले को गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस नहीं कर सकता, 90-120 दिन तक फाइनेंस कर सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे वी कम इन फाइनेंस A रेटेड कंपनी को फॉर दैट रिसीवेबल फाइनेंस जो है उसका हमने 100 करोड़ उसको दिया है, 14-15% के ऊपर वो ट्रेड बनता है। सो परफॉर्मिंग क्रेडिट के अंदर वो चीज़ें जिसमें बैंक फाइनेंस नहीं कर सकता है, जैसे बैंक, जैसे वर्किंग कैपिटल, या फिर जैसे कोई एक कंपनी को दूसरा कंपनी एक्वायर करना है, उसको भी बैंक फाइनेंस नहीं करता है। That is what actually performing credit does, and which is why these borrowers which are otherwise rated A, sometimes even AA minus, invariably borrow at rates at 12, 13, 14%. Because आपका क्लाइंट आपसे ये पूछेगा कि अगर ये 15-16%, 17% कोई दे रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि वो कंपेयर करेगा कि उसकी शॉप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर his borrowing rate is much lesser. You should be able to explain to him that there is a context of it. सिमिलरली जैसे रियल स्टेट के लिए मैं एग्जांपल दूं कि रियल स्टेट के अंदर अगर आपने 100 करोड़ का लैंड जो है गुड़गांव में खरीदा या बम्बई में खरीदा,
आपने पूरा पैसा दे दिया है, आपको थोड़े बहुत अप्रूवल भी आ गए हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाकी है, और 3-4 महीने के अंदर 6 महीने में रेरा का अप्रूवल आकर के आप लॉन्च कर दोगे। इस पीरियड के अंदर बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। इस पीरियड के अंदर आपको 18-19% का रेट मिलेगा। लेकिन जैसे अगर रेरा का अप्रूवल आकर के अगर लॉन्च हो गया तो उसके बाद में बैंक आपको 12% पे 11% पे फाइनेंस कर देगा। सो बेसिकली अक्रॉस दी स्पेस the opportunities exist only because for regulatory reasons RBI has told banks not to finance। जैसे कंपनी एक डिस्ट्रेस हो गई है, नुकसान, उसने डिफॉल्ट कर दिया है बैंक को, अब कोई प्राइवेट इक्विटी वाला उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है ना, तो प्राइवेट इक्विटी ने पैसा डाल करके उस कंपनी का जो 4 टाइम का डेट एबिटडा का लेवरेज था वो कम करके 2 टाइम कर दिया है। अब वो कंपनी फंडेबल है, वो आपको इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बैंक उसको पैसा नहीं देता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस के अंदर आ रहा है। तो हम बैंकों को टेक आउट करके स्पेशल सिचुएशन के अंदर वो 20-21-22% का ट्रेड बन जाता है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट दीज बोरोअर्स आर एक्चुअली बोरोइंग एट सच हाई रेट्स ओनली बिकॉज बैंक्स आर कंस्ट्रेन्ड टू एक्चुअली नॉट लेंड टू दीज गाइज। सिंपल चीज़ बताता हूँ कि अगर आप HDFC बैंक के पास में 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेके जाएंगे तो आपको आसानी से 12% 11% पे मिल जाएगा। लेकिन आप 10,000 करोड़ के आदमी हैं और आप HDFC के पास में जाएंगे कि मुझे 200-300 करोड़ का प्रमोटर फाइनेंस दे दो अगेंस्ट माई शेयर्स, तो वो HDFC नहीं देगा। उसके लिए 10,000 करोड़ का आदमी है, उसके पास में 1,000-1,500 करोड़ का ही टोटल डेट है, लोन टू वैल्यू बहुत कम है, उसके बाद में भी HDFC बैंक या ICICI बैंक उनको पैसा नहीं देगा, टाटा कैपिटल देगा या हमारे जैसे फंड देंगे। So okay, so when your client is going to ask you as to why these guys are borrowing at such high rate, you should be able to explain that each of these are not distress. They are actually well-performing firms, but because banks cannot give for regulatory reason, these funds actually invest in these funds, these kind of securities. Okay, finally, one more point of कि कितना फीस चार्ज करते हैं, छोटी सी बात कि जैसे इस तरह के फंड्स का to explain to investors that how it is absolute pure good आपके इन्वेस्टर को भी, because आप अब 1.5% 2% एक फिक्स्ड इनकम में चार्ज कर रहे हैं, तो ही विल से कि यार मैं FD में डाल देता हूँ या फिर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में जो 50 बेसिस पॉइंट का प्रोडक्ट में उसमें डाल देता हूँ, तो यू विल हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन दैट this fee actually for the kind of service that you are able to give to the investor finally, and the extra return that you are able to create in fixed income is actually very, very low relative to anywhere in the world. Indian fee actually in high yield space is actually very, very low. मोटा मोटी 1.5 से 2% के बीच में आपका different fee structure होगा. If you are putting in 25-50 crores, that fee drops to 1/4. Okay. बट बेसिकली 3 तरीकों से आप अपने इन्वेस्टर को समझा सकते हैं कि ये फीस जो है वो लो है। एक तो है ऑफ कोर्स इक्विटी जैसा रिटर्न है ये, तो जिस तरह से इक्विटी के फंड, तो जो आदमी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से फी को देख रहा है, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इट इज लाइक इक्विटी लाइक रिटर्न एंड देयरफॉर द फी इज क्लोज टू व्हाट इक्विटी फंड्स चार्ज। सेकेंड इज बेसिकली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस। सो एक फंड मैनेजर 20-25 साल का एक्सपीरियंस वाला आदमी एक एनालिस्ट के साथ में साल भर में 3 ट्रेड कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड कर सकता है। तो बिकॉज हर ट्रेड को स्ट्रक्चर करने के अंदर 3 से 4 महीना लगता है, एंड विच इज़ वाई इट इज़ एन एक्सट्रीमली कॉस्टली अफेयर रिलेटिव टू, जैसे मैं बिरला म्यूचुअल फंड में था, मेरा एक बंदा 50-60 हज़ार करोड़ का पैसा मैनेज करता था। ओके, तो हम 7-8 लोगों के बीच में हम लोग 2.25 लाख करोड़ मैनेज करते थे। हमारे मोज़ेक में 12 फंड मैनेजर्स हैं टोटल to manage a fund of 1,000 crores. So to that extent, it is a relatively much more expensive affair. So cost plus point of view से you should be able to explain कि इसके अंदर लोग, अच्छे लोग और ज़्यादा लोग लगते हैं। And finally एक तीसरा तरीका देखने का है कि basically आप अपने इन्वेस्टर के लिए एक NBFC चला रहे हो, है ना? You are actually running an NBFC because NBFC like Tata Capital and Aditya Birla Finance, Vivriti, these guys are actually running this business. तो because जैसे आप इन्वेस्टर को समझा सकते हो कि देखो 16 कमा रहा है इन्वेस्टर और 7 का फिक्स डिपॉजिट है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8-9% है, उसका 20% के आसपास में जो है वो फंड मैनेजर्स जो हैं या टोटल बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड फंड मैनेजर टोटल चार्ज कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली हाफ ऑफ व्हाट लॉट ऑफ एक्चुअली द होलसेल फाइनेंशियर्स चार्ज। सो दिस इज हाउ यू कैन people who ask as to the construct of the fee, you should be able to explain through the means of either by way of adjacency to equity or by way of adjacency to sort of NBFC. You could actually explain to them.
Finally, a lot of people will ask कि इन सब में तो नुकसान हो सकता है, NPA हो सकता है, and which is actually a matter of fact कि this is par for the course that अगर लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो कुछ तो NPA निकलेंगे ही, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्रेडिट फंड के अंदर NPAs आए थे, बट हियर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट यू कैन मॉडल देम, बिकॉज ये क्लोज एंडेड फंड है, तो म्यूचुअल फंड वाला स्ट्रेस नहीं है इसके अंदर कि अगर रन हो गया तो आप अगर कहीं पे NPA होने वाला है तो पहले आप भाग जाओ, and so anyone who stays back to actually become much worse. So here you can actually model, तो basically ये मोटा मोटी BBB A book 50-50 रेटिंग का बनता है परफॉर्मिंग क्रेडिट का, और उसके अंदर क्रिसिल का लास्ट 35 साल का जो डिफ़ॉल्ट साइकिल है कि 2.5-3% के आसपास में कंपनियां डिफ़ॉल्ट करती है, तो अगर ये अगले 4-5 साल के अंदर मोटा मोटी वैसा ही होगा जैसे 30-35 साल का होगा, तो आपका सालाना का कुछ आधा % का नुकसान होता है। पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो उससे बेहतर है, बिकॉज बैलेंस शीट्स काफ़ी अनलिवर्ड हो गई हैं, और खास करके अभी तक तो अभी जैसे 3-4 साल में तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इवन इफ द NPA कम्स, eventually actually investors on an annual basis will lose between 15 to 75 basis point, even if they come. And to that extent, a portfolio, देखिए अब ग्रॉस पोर्टफोलियो किसी का 15-16 बता रहे हो, टू गेट टू द नेट रिटर्न दो ही चीज़ें का ब्रिज है वहाँ पे, एक तो फीस है जो 1.5-2% का हमने बताया, और दूसरा NPA है जो 25 से 50 बेसिस पॉइंट आप सोच के चलते हैं। अच्छा फंड मैनेजर होगा तो बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, लेकिन यू हैव टू बी एज एन एडवाइजर absorb this basic idea that 5, 7, 10, 15 फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, एक आध दो चीज़ें वहाँ पे नुकसान ले सकती है, पर उसका इफेक्ट एक्चुअली एज लॉन्ग एज द पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड एक्चुअली विल नॉट बी सब्सटेंशियल। तो मोटा मोटी बिग पिक्चर आइडिया इज दैट NPA अगर होता है तो इफ ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विल बी एबल टू अब्जॉर्ब, म्यूचुअल फंड कुड नॉट अब्जॉर्ब बिकॉज म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 8-9% पे चलता था, वहाँ पे अगर 5% का NPA हो गया तो वो 2% का रिटर्न खा गया। लेकिन अगर आप 16% का पोर्टफोलियो चला रहे हो और 5-10% का अगर NPA हो गया, which is much higher than the average of last 10, 20, 30 years, then the total loss will still be not more than 1-1.5% in aggregate, and which essentially means that client would still earn 4-5% extra over and above fixed deposit. In good case, he'll earn 7-8%. In actually inferior case, he'll still earn 4-5% more. So that's the answer you will actually have to give to the client as far as NPAs are concerned. Okay. Finally, on a tax, अंतिम क्वेश्चन जो इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई मेरा टैक्स का क्या है, बिकॉज इधर तो फिक्स्ड इनकम है, तो और मैंने बोला शुरू में कि पास थ्रू है, तो नेट ऑफ टैक्स आपका कितना रिटर्न बनेगा। तो बिग पिक्चर यही है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका 7.5 का FD या फिर 7.5 का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर आप डालते हो तो आपको 7-7.5 का रिटर्न बनता है, तो 4.5-5% का नेट ऑफ टैक्स रिटर्न बनता है। इस तरह के बिजनेस के अंदर यू शुड बी एबल टू मेक 9-10% नेट ऑफ टैक्स रिटर्न। अगर ठीक ठाक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस पोर्टफोलियो में, नॉट स्पेशल सिचुएशन, वहाँ पे आपको 2% और बनता है, ठीक ठाक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस बिजनेस के अंदर यू शुड बी एबल टू मेक ऑन अ नेट ऑफ टैक्स बेसिस बेसिकली 5 की जगह 9 से 10% का रिटर्न। सो ऑलमोस्ट लाइक अ 4 to 5% excess, almost full as much as equity. Just going back to the original point कि अगर 10-11% का equity का रिटर्न बनने वाला है तो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न मोटा मोटी उतना ही बनेगा जितना इस तरह के फंड्स में बनेगा। Relative to Cat 3 fund again, actually you will always see that these funds actually deliver somewhat more return because वहाँ पे भी tax treatment actually is 5-7% ज़्यादा है, 20-22% का टैक्स लगता है बिकॉज ऑफ डिविडेंड टैक्स एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो दैट इज द आंसर यू शुड बी एबल टू गिव, दैट 4 से 4.5% के आसपास में या 5% के आसपास में वी विल बी एबल टू डिलीवर टू यू मोर देन द व्हाट यू कॉल फिक्स्ड डिपॉजिट और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ओके, सो अगर आपका इन्वेस्टर थोड़ा बड़ा है और उसके पास में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे कंप्लीटली फ्री अल्फा है, वहाँ पे एक्चुअली आई वुड आर्ग्यू vociferously that it will actually deliver you on average for long periods of time also on net of tax basis much better return than even equity. Okay, so people who actually have private limited firms, I think this should be the favorite asset class, which is the private credit, which is what has happened across the world. I think will happen in next 10 years in India also. Okay, so these are the questions that investors ask. We've talked about NPA, we've talked about cash, what do you call fees, and we've talked about taxes. Then finally a small point here that it is kind of
adjacency to fixed deposit to the extent that इधर आपका हर क्वार्टर में मोटा मोटी सारे फंड जो हैं कूपन देते हैं आपको, तो कोई आपको 0.25% देगा, कोई 1 देगा, कोई 1.25% देगा, बट मोटा मोटी 12-13% का सब जगह कूपन बनता है, which basically is a very good income solution. But from a risk point of view, why it actually fits in the client's portfolio, I'll try and explain. That basically अगर एक परफॉर्मिंग क्रेडिट या स्ट्रक्चर फाइनेंस के अंदर आपने अगर इन्वेस्ट किया है, तो आपका 3-4 साल के अंदर प्रिंसिपल एट रिस्क एक्चुअली कीप्स ड्रॉपिंग, तो 4 साल के अंदर 50% पैसा वापस आ जाता है आपका, वर्सेस इक्विटी के अंदर बिकॉज कूपन जो है वो डिविडेंड है सिर्फ 1.25% का, तो एक्चुअली कैश आपको हमेशा बहुत धीरे आता है इक्विटी में। इक्विटी का जो सारा रिटर्न है वो टर्मिनल वैल्यू में है, और डेट का जो है या हाई यील्ड का सारा रिटर्न कूपन में है, इधर अपसाइड कुछ नहीं है, लेकिन डाउनसाइड हर साल कम होती चली जाती है। अगर मेरे फंड ने 1 साल अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो फॉर द इन्वेस्टर हु हैड कम अ ईयर अगो, उसके लिए डाउनसाइड बहुत कम हो गई है और 2 साल बाद और कम होती चली जाएगी। बट बिग पिक्चर ये है कि प्रिंसिपल एट रिस्क जो है हर साल 10-15% कम होता चला जाता है इस इन परफॉर्मिंग क्रेडिट या स्ट्रक्चर फाइनेंस में, स्पेशल सिचुएशन में भी। सो एज लॉन्ग एज basically from your client's portfolio, it actually fits. I am not making an argument that 100% of this should be in equity or this. This is a bad argument. Here we all understand and mature enough that there is a role for every investing asset class. I think the private credit very early days, but my sense is that next 5-10 सालों के अंदर there's going to be a big boom in this asset class if we are able to explain all the points of NPA, taxes, fees and net return. But most importantly, the allocation, that when you put 10, 15, 20% allocation for your client, it actually improves the alpha at a portfolio level, because इधर risk दूसरी है. Just a final point, that जब आप एक high yield bond fund में invest करते हो, तो वहाँ पे आपका basic ask है कि कंपनियाँ जो हैं वो survive कर लें. That's it. जबकि आप equity में जब invest करते हो, तो basic ask है कि और profit margins उनका grow हो, या फिर उनका generally P&L bet है. What do you call it, when you invest in equity, versus here it's actually a balance sheet bet. So I think it kind of makes sense for the investors to invest in an asset class like this, simply to improve the alpha at a promoter, at a fund level. Finally, for advisors' role here, 3 things I would say as to how to select funds or fund managers. One is of course look for diversification, because इधर upside कुछ नहीं है. अगर आप 6 सिक्योरिटी या 7 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो में उसमें 2 उड़ गया, तो it can harm the investors dramatically. But if your portfolio is very, very diversified, the impact of 1 or 2 NPAs will be much smaller. So basically look for diversification, look for skin in the game. एक बहुत बड़ा फंड हाउस है, उसके लिए 200 स्कीमें चल रही हैं, उसमें से एक और स्कीम अगर ये चल रही है, तो there is very little to lose as far as that fund is concerned. Okay, so again, look for the skin in the game as to how much the GP, the promoter himself, has put in, or how much he's actually going to lose money in case he invests in a fund like this. And then finally ensure that his fees is reasonable. There are going to be structures with a catch-up and others. So be very clear as to what your client is paying. As long as he's paying somewhere between 1.5 to 2%, it's good. If it is excessive, be alerted to that. Okay? So that's the way to select. I think position, as I discussed, to an equity investor, tell him that it will improve the alpha without sacrificing the return meaningfully, because the risk is much lesser. And to the fixed income investor, basically it's just a 5-7% extra return over fixed deposit or corporate bond fund is how you would position to your investors. And finally, build 3-4 funds. Don't put all your money, even though you like our fund or someone else's fund, do not put all of it in one basket. Always diversify here also. In fact, the value of diversification in private credit or private equity or venture capital is a lot more than what you have in the public equity. And then, of course, stay engaged with all of us if you invest in our funds, because हम drawdown समय पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा कैश में तो नहीं पड़ा हुआ है. And all of that, you continue to keep track of it. So, but my sense is that advisors who actually embrace this, it's a new learning for you. You guys have actually sold equity, you guys have sold fixed income, you guys have sold direct bonds. It is a little bit of a learning curve. Maybe about 1.5 days, maybe half an hour or 45-minute presentation is not enough. But look for some material, learn this, because that will build a moat for you. Because you will be able to offer something unique to your investors that invariably every mom and pop store actually is not offering. And to that extent, it could become a competitive advantage, or at least comparative advantage, so to say. Okay, so
That's the advisor's role. Okay, this is just one page because I've come all the way from Bombay to explain as to what our fund is. In one slide, we've raised about 900 crores. This shows 800 crores right now. We've raised about 900 crores. 100% of the capital is deployed. It's a 12-member strong investment team. We do stuff that, it's Centricity's job actually to promote, but we do stuff that not too many people do. We bump up the return by actually adding investment banking fees and a lot of capital gain. And that has resulted that, we've delivered, 14.5% net return to the investors over the last 12 months. And we've delivered about 14% coupon in 4 tranches every quarter on the 15th, like 15 July, 15th October, 15th January, 15th April, we pay coupon. So we've delivered 14% coupon. Of course, there is zero impairment. Okay, so we are a pure play fixed income fund at Mosaic, and you should talk to the Centricity team to understand more about Mosaic. But my idea here is instead of popularizing Mosaic, I thought because I'm meeting some of you after very long since Birla days, my idea was to actually give you a glimpse of what this asset class is. And I'm also an investor in the end, and I kind of think that I would bet on private as an asset class, which perhaps even Centricity is doing, is where the real actually big business is going to build out. Exactly what happened in US, 10, 15, 20 years ago, after, in 2008 or thereabouts, actually there was very little business in private, and that's become much, much bigger. In fact, today, the private vehicles like BlackRock, Blackstones, Apollos of the world are much more valuable in US than the public market guys. And I think something similar would happen to all of us. So all the best. I'm happy to take a few questions if you have. Yes, sir. Yes. Firstly, I'm a very big fan of yours. Mic, please. Or I'll come down if you wish. So thank you for coming down from Mumbai. When I talk about Mosaic, I talk about you first, what you have achieved. You have an exemplary CV, right? Now my question is, what is the impact of the war on all the companies that you have invested? Because there are not good signs that we are hearing for the next 6 months at least, till oil stabilizes to below 70 or something. See, when someone compliments, you should assume that the difficult question is coming. So, okay, the war's impact on our funds, but I'll give you the general war's impact on India. We are in a little bit of a crisis situation. Even though we all want to feel that it's business as usual, it is not. If we don't sort this out, if US, Iran, and the rest of the world does not sort out Strait of Hormuz, it's kind of an emergency, okay? So I don't want to mince words here. So it's not a business as usual. So be very careful. So in general, if you are a big risk taker, you should actually calm down a bit. Let this pass. It's a binary event. Markets are not to price binary events. Markets are there to price a distribution. It could be, plus minus, 1, 0. And to that extent, I would be careful of, the impact of war, not just what would happen. Even if things get solved in about 15, 20 days, 30 days time, the probability of that is now somewhat moderate, but still not full. But even if that happens, there is a good likelihood of all the pain that we've taken over last 60, 70 days will continue to sort of simmer. And to that extent, be super careful of risk taking. That's number one. Generally, where the first order impact actually in India is coming to sort of areas, like I come from a small city called Bhilwara. There basically a lot of these processing units actually use natural gas to fire up. That gas is missing now. So, a lot of businesses there actually will begin to struggle. We were looking at a company called Wow Momo, okay, to fund. We backed out because of the war because, bhai, gas hi nahi hai, to kaise momo banaoge? So basically, the impact is actually pervasive. Small little businesses to even big businesses are going through struggle. So more importantly, urea stock has gone down in India. The potash and many other fertilizers actually in India are at super low level in terms of stock. So there could be a little bit of a food crisis also. I think India is relatively better because it's a big country, and to that extent, our ability to manage things are better.
but it could be a distressful situation for us. So generally be careful, you know. Now our job as advisors or investors is actually not do 0-1, because क्या है कि दिल कभी लगता है कि एकदम सब कुछ अंदर घुस जाए, कभी दिल में लगता है कि एकदम बंद कर दें. I'm saying take a little bit of a nuanced view that it is a risky time, and to that extent, ask yourself that anything that I'm investing, is it super adjacent to the first order risk? There is not great first order risk in something, then it's fine. And to that extent, okay, now going back to our portfolio, I think, we've done a lot of assessment. We run an AQR every month, asset quality review. Our general sense is that we are sort of one step removed from it. It does not mean that, we will not be impacted if actually this persists for, 6 more months. Even we will be impacted. You will be impacted meaningfully. But, my sense is that the first order impact right now appears super low. Nothing in our portfolio actually has seen any deterioration whatsoever. So this is as of right now. No credit downgrade has happened. In fact, few credit upgrades have happened. So things are fine right now. But we are also alerted to this, and to that extent, we are being a lot more careful for few things. Anything which actually exports to some of these areas, via Dubai and Middle East, we do not wish to do it. Anything, which actually takes the inputs like gas and all, we are super careful of that, both natural gas and otherwise. Anything which has got of a first order impact because of the crude crisis, we are staying away from them. I think, consumption growth hit in India will be somewhat more systematic, so it's slow descent. And to that extent, we are okay. I'm also super careful of China proxies. Anyone who is in auto ancillaries, I'll be super careful, because in the wave of this EV, India has no play. Generally, I'm careful of textiles also right now. So in a sense, it's kind of I began saying that I don't want to do mumbo jumbo of a lot of this, because it's only well documented as to what I think of many things. But nonetheless, because you asked, I answered. But it's time to be somewhat pessimistic right now. Sorry. Yes, sir. Hello, sir. Thank you for explaining the private credit fund. First of all, on a macro term, I have 1 to 3 questions. And as you have already justified that fixed private income or credit fund Just is beware that everyone is waiting for lunch also. actually, firstly, I want to take the in macro terms. In triple B bonds and A bonds, we generally get a cash flow. Where in fixed income, does it have any generative cash flow, or we have to regulate like it's 11 to 12% median yearly, or are we are getting any cash flow or not? So, these, as I said, initially explained that some of the transactions that, see, we at Mosaic do a mix of structured finance and performing credit. So about half the portfolio is cash flow backed, 60% of that. And then rest is actually collateral backed. They are funding, I'll give you 2 or 3 very quick examples. We funded a promoter of Kim's Hospital. You would have heard someone from Hyderabad? You've heard of Krishna, Okay, so basically this is got a big, listed company, 35,000 crore of market cap. Promoter owns 30% of it. About 12,000 crore guy. He wanted to borrow money. About 75 crores we funded him against 2.5 times of his shares, listed shares, at about 15%. Okay, so that's the Kim's transaction. Against the shares, he wanted to have this money to acquire a new hospital. Now, is there a cash flow there? No, but his listed securities are pledged to us, that in case if things go down south, because this very well liquid bond owned by many mutual fund, a new QIP is being done very recently. In next 1 month or so, you will see that. So our funding to him is actually loan against share. Okay, so that's one kind of trade. Or we've done the same thing to Strides Pharma promoter. We've done it to the Muthoot group. So we've done some of the loan against shares or bonds, which is primarily a promoter finance. So there is no cash flow there, but there is basically a good security and event that 6 months, 12 months, 18 months out, there is some event out there through which he'll raise money and return money to us. But worst case scenario, a very liquid bond, 2 times, or liquid shares, which we can sell and get out. Loan against share के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम नुकसान हुआ है, as long as the share is good quality. So मोटा मोटी our structure is that 10,000 crore का आदमी होना चाहिए, and loan to value 25% से कम होना चाहिए. We fund them. Typically, these trades happen between 14 to 16. Then there are cash flow trade. मैंने आपको जैसे रोटोमैक का ट्रेड बताया, आप उसको पैसा दे रहे हो, आप गवर्नमेंट का पैसा रिटर्न आ रहा है, वो हमको रिटर्न कर रहा है. So that basically is a cash flow trade.
Okay, so basically a mix of cash flow and what you call good collateral trade is what we do in Okay, my next question is on to the part where Centricity teaches us that asset allocation is the only answer for an investor. yes. But as I am a very conventional, because I'm from Calcutta and my retail investors are mostly conventional. If this credit fund is giving me 11%, 10% after post-tax also, and if I'm having 1 CR or 2 CR, as you have already said, and Centricity also teaches us not to put any part of the portfolio in one asset class. But if I'm, because your fund is already diversified in 6 to 5 segments and it's already debt structured all over. So why not I can put 2 CR or 1 CR if a equation I'm taking, if a one person is having 1.5 CR, I can easily invest the whole amount in your No, fund. I agree. See, मैं यहाँ पे तो I have to be moral. यहाँ पे I am ready to take money. Yeah, आप मुझे दो पूरा 1 crore. and usually into the debt structure, the global market is right now in high. Okay, generally speaking, I'm sorry. No. Kind of, I took it lightly. No. My generally point is that if you're a large family office, okay, you'll be talking to a lot of rich dudes, who've got 50 crores to invest. Yeah. And then proclivity to invest all of it in one fund will be there because of adjacency, because, you know the guy, because he speaks well, like I do. You may want to invest all of it in one fund, but you generally, as you do in equity, as do in other asset classes, distribute a little bit to 3 or 4. You don't have to do to 10, but look for 3 or 4, right? And continuously engage with them. We all have calls every quarter, and discuss with the portfolios. Much of it you won't understand, but you will, exactly this is what happened to some of us 20 years ago when we were trying to learn equity, how to sell. Same thing, you'll go through the learning process. But if the investor is can put in just 1 crore, then fair, you have to choose between me and someone else, So whatever Centricity is telling you is right. And third, my question is as practical to me. Right now, the debt structure module all over the world is on the high pattern for me, because last time when recession struck, and right now we are in 2026, the next period, how much safe is the principal? At what cost may it come? When we are investing into the debt, can I rationalize the fund with bonds, or it is already rationalized by the fund manager or not? No, मेरे ख्याल से किसी को देखो, one thing I am very clear, बाकी सब कुछ करो ना, direct bond में invest मत करो, है ना? That's I know a lot of you may be doing it. Investing directly in the bond is I don't know whether you asked the same question, but I forgot to mention this, that do not put money in bond directly. Because जब तक आपके पास bond आता है, तब तक there is a lot of dilution which has happened because 1-2% जो है बीच में जा चुका है. This is all we'll charge in any case. So you don't, unless your client he has diversified across 15, 20, 30 bonds, never invest in single bond. So my general idea is that, always come in pooled vehicles, which there is a transparency, how much a fund manager is charging, कुछ गलत करेंगे तो SEBI पकड़ेगा, everything is out in public domain. And to that extent, you're sort of getting the right price for the risk that you're underwriting. So generally speaking, don't invest in bond, if that was a question, but I'm sorry, I did not get No, because if I'm having a book size of 100 CR bond, and if I am having a book size of here 100 CR, which will be compared relatively safer or not? My question was that only. If I'm having a book size of 100 CR bond from my clients, and if I'm having a 100 CR book of this private credit fund, hopefully this will be rationalizing the risk. No, this will actually likely out-deliver substantially. Okay. More questions. Sorry. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. More with you later. Yeah. Hi, sir. Sorry. So just a question on the banking and how the private credit is placed. So Yes. today I have seen the banking cost of NPAs, gross NPAs are around 3.5, and for PSB it is north of 6%. So I just want to have a context of the NPA which you showed as compared to the NPAs number which are there in the bank, which is a little on a higher side. No, NPA तो कहीं पे भी नहीं है अभी तो टोटल स्लिपेज बैंक का सी ग्रॉस NPA मत देखो बेसिकली स्लिपेज इज अ गुड वे टू लुक एट इट कि भाई पिछले 1 साल में है ना नया क्या क्रेडिट कुछ लॉस हुआ है क्या बैंकों को है ना वैसा देखना चाहिए राइट लिगेसी ग्रॉस NPA जो है वो तो पुराना ग्रॉस NPA मतलब पहले कभी NPA हुआ था वो ऑलरेडी स्टक है तो कुछ रिकवरी हो रहा है कुछ राइट ऑफ हो रहा है राइट ऑफ होने के बाद में जो बचा है वो नेट NPA बन जाता है तो नेट NPA अगर देखोगे बैंकों का तो 1.5% है ना बहुत कम है पिछले 30 साल में इतना अच्छा बैंकों के साथ कभी नहीं रहा है तो उसका बेसिकली उसका मोरलेस उससे आप एक व्यू ले सकते हो कि इससे अच्छा कभी नहीं होगा इससे खराब ही होने वाला है दैट्स नंबर 1
नंबर 2 इज़ दैट हमारे सब में 15-20 लोग जो ठीक ठाक काम करते हैं, वहाँ तो कुछ एनपीए नहीं है अभी तक। बट इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा। सी आई कुड हैव एक्चुअली टोल्ड यू बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि कुछ नहीं होता है, हम सब अच्छा मैनेज कर रहे हैं, देखो 15 बना के देंगे आपको। पर ये मान के चलना चाहिए कि सफ़र में धूप तो होगी, कुछ तो दिक्कत आएगी बीच बीच में। मोटा मोटी होता है ना नुकसान, हमने देखा कि 1-1.5% 2% उड़ता है BBB रेटेड में। तो ये मान के चलना चाहिए कि 5 साल में आप किसी रैंडमली किसी फंड को डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हो तो 2-3% तो उड़ जाएगा। बट वो 2-3% 5 साल के मतलब है 50-60 पैसा, है ना। तो 16 का रिटर्न 15.5 हो जाएगा। तो आपका नेट रिटर्न आप 14 पाना चाह रहे थे तो वो 13.5 हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट। एनपी तो आपका पॉइंट आई नो यू आर मोर स्पेसिफिक कि एनपीए ज़्यादा है या कम है। तो पहली बात है कि 50 साल के इतिहास के अंदर इंडियन बैंक्स के अंदर इतना एनपीए कभी नहीं था, इतना कम एनपीए कभी नहीं था। 14% एनपीए था अभी 7-8 साल पहले 2015-16-17 में। वो घट करके अभी नेट एनपीए 1.5 हो गया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली स्लिपेज रेशो जो है, जो इंक्रीमेंटल एनपीए बिल्डअप हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ बुक इज ओनली लेस देन 1%। सो सुपर गुड बुक, इट विल गेट वर्स फ्रॉम हियर, है ना। सेम थिंग परफॉर्मिंग क्रेडिट वाला बुक भी आपको ये आके बोलेंगे कहीं हमारा कोई एनपीए नहीं है पूरी इंडस्ट्री में, और हम अपना कॉलर सीधा करके बोल सकते हैं। बट पता है ना, इवेंचुअली आप उस चीज़ में हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, 2-3 तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक से अंडरराइट करो, पोर्टफोलियो को बहुत सारा डाइवर्सिफाई करो, है ना, और नज़र रखो, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, है ना। तो ये यही धंधा है, बैंकों वाला ही धंधा है हमारा भी, है ना। वो यही कि यहाँ एजेंसी है, बैंकों में क्या है, कमिटी है, कमिटी 1 है, कमिटी 2 है, फिर नीचे वाला आदमी जो कर रहा है, जो ओरिजिनेट कर रहा है, और ऊपर वाला जो देख रहा है, उसमें कोई लिंक ही नहीं है। यहाँ हम ही कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं। So to that extent, a better coverage, better control on the asset is there, and to that extent, invariably, not in India, Apollo, Blackstone, BlackRock, सिटी से ज़्यादा ही अच्छा करते हैं हमेशा। सिमिलरली हम या कोई भी रैंडमली ठीक ठाक मैनेज जो कर रहा है परफॉर्मिंग क्रेडिट या स्ट्रक्चर फाइनेंस, वो बैंकों से बेहतर करेगा जनरली स्पीकिंग। उसके लिए नहीं कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी वजह से कि हमारा जॉब ऐसा है कि नज़र हमेशा रखनी पड़ती है, क्योंकि एक बार ख़राब किया है तो आप वापस कभी नहीं बेचोगे। सर जस्ट एक एडिशनल क्वेश्चन है इसी के कंटिन्यूएशन में। सो एवरेज एनपीएज आई अंडरस्टैंड, बट कुड देयर बी अ ब्लैक स्वॉन इवेंट जहाँ पे मेजर करेक्शंस हैं, मेजर ड्रॉडाउन्स है, आईएलएफएस, कोरोना, हो सकता है 2013? ऐसा सोचते हैं, देखो है ना, देखिए अब ऐसी है कि 35 साल के साइकिल में 2.5% का 3% का एनपीए है, तो उसको डबल कर देते हैं जैसे, है ना, तो 6 हो गया, है ना। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो 6 साल के अंदर 6% का एनपीए हो गया, तो हर साल 1% उड़ गया, है ना। 6% टोटल नुकसान हुआ, 16 बन रहा था आपका, तो 16 की जगह अब 6 डिवाइड बाई 6 कर दोगे तो 1% हर साल उड़ गया, तो 15 बन गया। एकदम बिग सिंपल मैथ समझिए, 10 एनपीए हो गया, है ना, और 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल का फंड है, और 10% का एनपीए हो गया, तो 2% उड़ गया। तो आप जो 16 कमा रहे थे अब 14 कमाओगे। 15 एनपीए हो गया तो 3% उड़ गया। तो बेसिकली, लेकिन अब देखिए, एक बॉन्ड है आपका आपके पास में, और वो एनपीए हो गया है, तो आपका पूरा उड़ गया। So basically this math only works if the portfolio is pooled, meaning it's of 25-30 securities. It doesn't work if it's 3 security, because फिर रैंडम हो सकता है। जब 3 ही सिक्योरिटी का आपका पोर्टफोलियो है, तो हो सकता है कि एकदम राम राज्य आ जाए, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि तीनों उड़ जाए। लेकिन आप 30 सिक्योरिटी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज गॉन अप, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सटेंशियल लॉस इज गॉन डाउन। And how many portfolio companies you will have in your? 17 हैं अभी, 17. we'll get to 25 by 25. जुलाई अगस्त। So it's like a 4% to each. तो 5 का कैप है हमारा, 5 का कैप है। हाँ, तो 4 पे पहुंच जाएंगे, है ना। Thank you. Any other question? Yes, sir. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जहाँ तक डिफ़ॉल्ट की बात है वो तो बैंक में भी होता है, कई बार बैंक भी बंद होता है, तो वो तो एक रिस्क हमेशा डेट के साथ रहेगा ही। पर जो आपने एक टैक्स वाली चीज़ कही थी कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड फर्म में टैक्स का कुछ पॉइंट बच रहा है जिससे पैसा बचाया जा सकता है, हाँ, तो वो कैसे है सर? तो क्या है ना, मैं बताता हूँ वेरी क्विकली। जिसके पास में भी 25-50 करोड़ है ना, उसको अपना प्राइवेट लिमिटेड खोल देना चाहिए। सबसे पहले आप जाके रिकमेंड करोगे अपने इन्वेस्टर को कि 50, क्या है कि आरबीआई ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है कि अप टू 1000 करोड़ का अगर आपने एनबीएफसी बनाया तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछली पॉलिसी के अंदर आया है। तो इसका मतलब जो माथापच्ची थी पहले, क्या था कि अगर आपने 100 करोड़ का अपने प्राइवेट लिमिटेड में पैसा डाल के वहाँ पे आप पैसे को घुमा रहे हो अलग अलग एआईएफ में, बॉन्ड में, तो वो एनबीएफसी कैटेगराइज हो जाता था, और एनबीएफसी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना पड़ेगा तो 50 कंप्लाइंस आ जाएंगे, तो क्यों माथापच्ची करने का। ये था, आरबीआई ने बोला है कि भाई 1000 करोड़ तक का आप हमसे रजिस्टर मत करो। एनबीएफसी हो
दूसरों से पैसा मत लो, सिर्फ अपना पैसे अपने दोस्तों का पैसा डलवाओ और उससे तो आप बेसिकली किसी के पास में 25 करोड़ का भी पैसा है, उसके लिए द कमर्शियल स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ किक इन फेवर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहली बात है ना, आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन आई एम अनसोलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूँ। दूसरा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, क्योंकि टैक्स 115 भी है जो भी है वो 22% ही है, तो 25% का टैक्स टोटल लगता है ब्लेंडेड। तो 25% के टैक्स के ऊपर आपको अगर 14 का नेट बन रहा है तो आपका नेट ऑफ टैक्स रिटर्न 10-11 हो जाता है ना, 11 हो जाता है ऑलमोस्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हीकल। एक्चुअली आप एक एवरेज प्राइवेट क्रेडिट फंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्विटी से बेटर करेगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज लॉन्ग टर्म में हमेशा बेटर करेगा, कैट 3 से हमेशा बेटर करेगा। और टैक्स इज़ अ मैजिक कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो बेसिकली आप 39% वाले हो तो आप एलएलपी बना दो, है ना, तो आपको 32% का टैक्स लगेगा। आप 50 करोड़ वाले हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो। टाइम अप। एनी अदर क्वेश्चन?